Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behaved today and what can we expect tomorrow. So first thing first, yesterday during afternoon I published a video. यहाँ पे हमने ये कहा था कि हमें ये नहीं लग रहा कि ये वॉर ज़्यादा लंबी चलेगी. I have given my reasons there. So if you look at the comment that was made by Mr. President Donald Trump, he said that from unconditional surrender to negotiating table where he said that he is ready for talks. So there is a gradual shift that we see in the overall positioning of US, where from absolute they were saying that there has to be unconditional surrender by Iran. Now they are saying that they are ready for talks. So that is something which is heartening for the market. And also, once he said that the market, the war is not going to last long, so that cooled off the oil prices and we witnessed today's rally. Now this was our calculation yesterday itself. Then we said that okay, we are not expecting war to go pretty long, and today morning we heard the news that's coincidental, but yeah, that is in line with our expectation and our overall analysis. Now let us discuss the market. Come to market. Now all those news did had a very positive effect on the market, and we saw around 250 points up move, 260 points up move in the Nifty today. Nifty opened down or opened with a gap up, made low, and then from there we saw a very strong pullback. And this candle, we can say that to be a hammer or a hanging man. I think I'll go with hammer. Why? Because there has been a very strong pull from the bottom. So now what do we expect for tomorrow? We expect for tomorrow, see, till the time Nifty has not past 24,500, we are still not out of the woods, right? So we will have to be very cautious in case if somebody wants to be very cautious about the market and wants to position himself very safely, then I think that entering at a lower level is a very good idea. 24,000 stands as a very strong base right now, and entering somewhere nearby that region is something which is very positive, or I can say it's relatively risk reward is favorable in that sense. So bottom seems secured. I have published the video yesterday as well, where I said that the bottom seems secured, and we got a good response out of that, where we saw that okay, the bottom is indeed secured. But are we out of the woods? Not totally. So I think that this region, this line around 24,100 type is a good level where a demand zone is erupting, and we see that this gap, the one that we are seeing on the screen, has not been able to fall below this. So this line is 24,076 to be precise. So entering at lower level seems to be a good idea. There's a good demand zone. So and for market, till the time it is not crossed 24,500, we are still in the woods, right? We are not out of the woods. So if I look at the daily candle, we see that there is a gap. Probably we might have to test to fill the gap. In fact, we have, for this candle that we see here, that is your 4th March candle, we have just tried to kiss the bottom of the candle, 4th March candle, and hung in there. Nothing much. We are not going. So we'll have to see whether we manage to close above this or not tomorrow. And if it does, then probably we might see 24,500. On the bottom side, I think that 24,100 seems to be a secure. 24,700, 24,000. What is the level? Let me just check. 24,076 appears to be a very good support or a demand zone. So that's what for Nifty. Bank Nifty again is a good. It has got a lot of gap to fill. See, we have been operating in gaps itself. Bank Nifty was up around 1,000 points today. So for Bank Nifty, what I think is, yeah, that is what it is. Bank Nifty, what I think is, yeah, this level is 56,500, 56,700 appears to be a good demand zone for Bank Nifty as well. See, I'm not suggesting that one should open and vent all gaga entering into the market. I do not expect that way the market is going to behave. Market is going to give opportunity intraday, where it is going to fall down, and then probably it is going to inch up again. So the risk, from risk reward perspective, if somebody is trying to enter into the market, try and enter into the demand zone beside just directly jumping into the market. Don't do that. What my belief is, or what my understanding is, that we are still not out of the woods. There are some amount of short pressures that we are seeing. Now if this level, if somebody managed to enter, I think that Bank Nifty might try and fill the gap. The gap is pretty far, that is 57,700. तो यहाँ से लगभग आप मान के चलिए
500-700 पॉइंट का ऊपर का गैप बनता है जो भरना बचता है। अगर वो इस लेवल को पहले तोड़ता है 57,200, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये ऊपर जा करके आपका 57,700 के आसपास तक का एक इट कैन मेक अ मूव टिल देयर, ठीक है। बट देन अगेन वन शुड ट्राई एंड लुक फॉर अ सेफ जोन एंट्री, राइट। कम टू द डेटा. Now the data. See why I'm saying that we are still not out of the wood. The reason is because I still see that there's a lot of cash-based selling, and there is lot of put outstanding by FII. So somewhere down the line, it has to melt, right? And according to my experience, FIIs are usually the guys who don't lose it very easily, right? So what my view is that in case if somebody gets an opportunity to enter at a downside, I think downside is relatively cushioned. It's pretty much support that we see from other participant of the Nifty, right? So that is what my take is. FIIs have minorly trimmed their shorts. उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट अपना कम किया है। अगर हम देखें DI की कोई ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, प्रो ने अपना थोड़ा सा लॉन्ग कम किया ना। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस हेजिंग। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डाउन साइड थोड़ा प्रोटेक्टेड लग रहा है कि फॉर एग्जांपल व्हाट प्रो डज कि अगर उन्होंने बहुत सारा पुट खरीदा है तब ये फ्यूचर में लॉन्ग रखते हैं, इन केस उसको हेज करते हैं। अगर ये मार्केट ऊपर चली गई तो दे कैन नॉट अफोर्ड लॉस फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो व्हाट दे डू इज़ दैट दे बाय पुट, बट फ्यूचर में वो लॉन्ग रखते हैं। अब अगर वो लॉन्ग कम कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉल की पोजीशनिंग का उनका व्यू है कि भाई यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो अगर कॉल लेना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा कम करके नीचे लेके आएंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रॉब्ली उनका एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया होता जा रहा है। उनका एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया होता जा रहा है। वो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा सा मैनेजेबल है कि अगर एक तरफ नीचे गया तो दूसरी तरफ से देयर इज सम कुशन टू सपोर्ट देयर पोजीशन, राइट। क्लाइंट ऑन द अदर हैंड हैज़ डन नथिंग, मतलब कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। कैश एक्टिविटी समथिंग विच इज़ वरीसम, क्योंकि FIs का अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने फिर आज भी सेलिंग की है। उन्होंने आज भी सेलिंग की है। तो दिस इज़ 4,000 4,500 करोड़ के आसपास उन्होंने आज भी सेलिंग की है, विच इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव और हार्टनिंग। पर हाँ वही है कि दिस पैटर्न वी हैव बीन सीइंग सिंस क्वाइट सम टाइम, जहाँ पे FIs कॉन्टीन्यूसली सेल करते जा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल एक्टिविटी में देखें तो निफ्टी में अच्छा खासा लॉन्ग है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एंटरिंग एट अ कुशन लेवल एट अ डिमांड जोन इज़ रिलेटिवली अ गुड आइडिया फॉर एंटरिंग इनटू द मार्केट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट रिस्क ब्लेटेंटली, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द अदर फैक्टर्स दैट वी ट्रैक ओपन इंटरेस्ट। ओके, आज क्या हुआ, ये अगले महीने के मतलब 17 मार्च की एक्सपायरी है। तो 17 मार्च की एक्सपायरी पे आप देखें को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ तो अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे नीचे हुई है आपको पुट राइटिंग। वी सी दैट 24,200 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर जोन। अगर ये इसको वॉलेट करता है देन 24,000 इज़ अ लेवल विच इज़ फ्रॉम ऑप्शन स्टैंड पॉइंट वो एक सपोर्ट बनता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 25,000 के आसपास। सो दिस इज़ गिविंग एन आइडिया कि हमारा ओवरऑल टेक तो अभी इनिशियल डेज बायस हमारा पॉजिटिव भी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड प्रोस्पेक्टिव से वी शुड ट्राई एंड एंटर इनटू अ डिमांड जोन। डिमांड जोन आपका 24,075 के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट माय आउटलुक फॉर द मार्केट इज़। लेट्स लुक एट ब्रेंट। ना ब्रेंट का अगर आप देखें दिस वेरी गुड। ब्रेंट ये बहुत मैसिव, ये सीधा 114 से जा करके अभी चल रहा है $87। द मैसिव फॉल इन ब्रेंट। तो मुझे लगता है कि एज द टाइम पासिस थिंग्स विल कूल ऑफ एंड प्रॉब्ली the war will end sooner than expected. That's what my view is, because there are multiple political, financial cost to it, and we have already discussed that in our video yesterday. So our take, and if you look at INR as well, INR is also relatively, मतलब चलिए अपने ऑल टाइम हाई से 92.39 से ये नीचे आ गया है। इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 91, द लेवल इज 91.85। सो दिस हैज़ ऑल्सो कूल्ड ऑफ सब्सटेंशियली। डॉलर इंडेक्स अगर देखें, डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ गया, विच इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। डाउ जोन्स इज अप अराउंड 150 पॉइंट्स। We will see how it behaves today, but overall sentiment remains entering into a more lower level, observing that risk reward perspective is more rewarding once we try and enter into more demand zone oriented positions, ठीक है। So that is what we think. Keep a watch on oil as well. अगर oil और गिरता है then it is again going to be pretty good. अगर overnight, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ेगा। मतलब I think the near term top for oil is over. ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो समझ में आ रही है बात, मुझे लगता है कि शायद दिस वॉर इज़ ऑन द कोर्स ऑफ टेकिंग अ यू टर्न प्रॉब्ली।
if not now then probably in some time to come, but it will be shorter war and not a longer war, which will have a direct impact on the market as well. ठीक है, क्योंकि अगर बॉन्ड डील, अगर इफ़ यू ट्रैक बॉन्ड डील देन यू विल सी दैट bond yields are also going haywire. So for now what I think is buying or entering into a dip is a saner idea, and that will be from the risk reward perspective. That's all from my side today. That's all that we can analyze today, we can figure out, and hope you would have liked the video. If you have liked the video, I request you to please click the like button, and if you have not subscribed the channel, my humble request is to subscribe the channel, because you put a lot of effort into analyzing all this. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.